Say any questions you had from yesterday ratio of the आपकी आवाज थोड़ी दूर से आ रही है. price on P&L ratios yesterday. The ratios are, yes, I have one question. Wait, where is it? Sorry, I'm not able to hear you. Come again. Can you hear me now? I can hear you now. So, I wanted to ask, operating profit, what is the formula for operating profit? So operating profit is our profit from operations. So it's basically your EBIT, earnings before interest and taxes. Uh, and then what is return on sales? Return on sales can have now two ways. One is your net profit divided by your sales. That is the first formula which we saw yesterday. There is one more interpretation. Let's quickly check what we did yesterday in all the formulas. Return on sales का typical meaning same होता है net profit divided by your sales. Just a minute, मेरा अलग slides open हो रहा है. एक मिनट देना. I think I have lost the slide or what. हाँ ठीक है, I got it. रिटर्न ऑन सेल्स का देखो दो फॉर्मूला होता है. आप शेयर वन करते हैं. इज net profit by sales. That is the ideal formula, which is a net profit margin. Screen share. हाँ जी कर रहा हूँ भाई. However, in your book, return on the sales is treated as an operating profit margin ratio. This is what in your backer has considered. इसका typical नाम होता है operating profit ratio only. As again in your backers they have said it's a return on sales ratio, so we have continued to use the same name. Like typically this is your operating profit ratio, which is your EBIT divided by your sales. EBIT is nothing but your earning before interest and taxes. Okay. Okay. So let's go. I think you have already calculated. I'm not going to check right now whether it's right or not. हम लोग चलते हैं next ratio पे. So we have done the profitability ratios, we have done the DO point assessment, we have done the liquidity ratio. These are the balance sheet ratio, then all the days ratio and turnover ratio, both backer type we also did. And we have also done this from the point of view of how industry treats. Industry even days calculate करने में average AR ही लेती है, not the ending ARs. Then we calculated cash conversion cycle as well. Now चलते हैं नए रेशियो पे. These are your equity and liability sort of ratio. Now what solvency ratios represents, it says that how good is company's equity or company's asset in the event of liquidation, number one. So this is from the point of view of the lenders or the creditors. And number two, how well company is performing in terms of the debt. So for example, you can have a huge assets in your balance sheet, but if it is represented by a huge liabilities, then the portion of the equity or a portion of the owner's contribution is pretty less. So even though you have a great assets, you may not have a great owner's equity, owner's contribution there. So solvency ratio basically measures that how effective or a solvent is companies investors and companies long-term debtors and companies creditors in the event of liquidation.
One by one चलता है, the things will be quite clear. The first one is a debt to equity ratio. Debt to equity ratio क्या बोलता है कि if suppose कंपनी के पास $1 का इक्विटी है, तो उसके सामने कितना टोटल डेट है. So suppose if company is shut down tomorrow, you ideally want your debt to equity ratio as low as possible because you are the owner of the company. You want maximum money with you. However, what creditors or a long-term lenders will think that you need this ratio higher, because higher your debt, you also want higher the equity, so the person can pay you your debts in the event of the liquidation. So from the point of view of investor, you want to reduce this ratio. From the point of view of the lender or a creditor, you want to increase this ratio. So formula क्या है? Formula for debt to equity ratio is total liabilities divided by total equity. आपके बुक पे चलते हैं एक बार. Why does lender want more? Why does lender want more? Because suppose tomorrow if you have a debt of 1.3 million, but you have an equity of only $1. In the event of liquidation, are you going to give anything to lenders? No, you will say you don't have a money, go home. So what debtors will say, what lenders will say, that if we have a $1 of debt, we want at least you have a $1 of equity. So at least we can take your part as a recovery of our debt. So lenders or creditors want this ratio at least to be 1:1 or maybe even higher, that their stake is protected in the event of liquidation. But what owners feel, owners want to reduce this as much as possible by reducing the liabilities. Owners don't want liabilities in the company. They don't want to pay anything out to the creditors, to the lenders. They want to maximize their wealth. So they want to reduce this, whereas the creditors on the opposite side, they want to increase this. But in 0.91, don't we already have $1 for each liability dollar? Yes, for each liability, so you can say for each equity, you have a 0.91 of debt. So lenders are very happy here because they have a 1.3 million of debt, but they can see owner has 1.4 million of equity. They are very happy. But what equity people are thinking that okay, we have a equity, but if something goes wrong tomorrow, 1.3 million तो debt वाले लेकर चले जाएंगे. What they will be left with only 120K, 130K. So they want to reduce the liabilities, the debt. So equity people wants to reduce the liabilities. Liability people wants to increase the equity. So both party wants to protect their stakes and both interests are in opposite direction. क्रेडिटर्स को कब मजा आएगा? जब कंपनी अच्छा कर रही होगी. लेकिन इक्विटी वालों को कब मजा आएगा? जब उनके पास कोई डेट नहीं है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो उनकी जेब में जाएगा. सो बोथ हैव द अपोजिट इंटरेस्ट. Okay. चलिए एक बार आप देख लीजिए फॉर्मूला डेट टू इक्विटी रेशियो विद द क्वेश्चन जो आपको दिया है. एंड मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लो एक बार. No. You can move forward. सॉरी, कम अगेन. आगे चल सकते हैं. चलिए आगे चलता है फिर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. अ टोटल डेट रेशियो. सो टोटल डेट रेशियो इट्स बेसिकली अ इंडिकेटर की कंपनी के पास जितने भी एसेट्स है उनके सामने कंपनी का डेट कितना है. Now it may be possible a company is a asset rich company, they have a huge assets, लेकिन क्या फायदा कि अगर सारी assets mortgage हो या सारी asset debt में हो. So ultimately you may have a assets, you can generate the return from investment. So doing a business through a debt is not absolutely a bad option,
बट यू ऑल्सो वांट टू मैनेज योर रिस्क इन अ वे कि आप जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, दैट इज सफिशिएंट टू अर्न द नेट प्रॉफिट फॉर योर इक्विटी शेयर होल्डर. तो टोटल डेट रेशियो क्या दिखाता है? टोटल डेट रेशियो रिप्रेजेंट्स की आपकी बैलेंस शीट में आपकी एसेट्स के सामने आपकी टोटल लायबिलिटीज कितनी है. जनरली अगेन creditors wants this ratio to be as high as possible. Why? Because they want to protect their interest कि अगर कल को कुछ भी होता है कंपनी में liquidation, so they have the total assets in their hand to get the recovery. Whereas you want liabilities to be as lower as possible. Why? Because of interest expense जो है आप उसको avoid करना चाहते हो, and you can maximize the equity's wealth. So the formula for total debt is total liabilities divided by your total assets. क्विकली देख लो एक बार दूसरा फॉर्मूला टोटल डेट रेशियो. So we wanted lower. We will, yeah, as a equity owners to prefer lower debt, so you don't pay a interest, so your net profit goes up, net profit goes to your retained earnings, which means your portion is getting increased. So as the equity percent, you want liabilities to be as lower as possible, but from the liability or a creditor's point of view, you want this ratio to be as higher as possible. Why? Because अगर कल को liquidation होता है, like in this example, you have a recovery of 1.3 million, but company के पास 2.8 का asset है, so that's perfectly okay. Your coverage is good. However, what if you have a 1.3 million का debt and company only has the assets of 100k? And your stake is at a risk. So you want to make sure as a creditor that your stake is at least recovered to the extent you have a debt available. So 1:1 ratio is ideal from the creditor's point of view. Owners क्या सोचेंगे? Liabilities को हटाओ. Why do we need to pay the interest? Whatever we earn, that should come to our retained earnings as a reserves and surplus. Again, दोनों का जो interest है वो opposite direction में चलता है. Why would the bank want us to have 1:1? If it's 1:1, then aren't we close to default? Why you will be close to default? So if I have 1 million total assets and I have 1 million total liabilities, I have nothing in my business. Exactly. So that is from the bank's point of view. You think what bank thinks ki, okay, I'm giving you a 1 million loan, but I'll mortgage your property. So if tomorrow you run away, I can seize your property. Nobody will give you a bank without loan without a protection, right? So you have at least a similar or a higher value of mortgage available. Even if you have an asset of 1 million, you will not get a loan of 1 million. You may get a funding of 600k, 650k only. Okay. ऑलरेडी एक बार फॉर्मूला मैथमेटिक देख लो. अगेन इंटरप्रिटेशन दे विल नॉट आस्क यू, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन पर्पस. देख लिया. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. इक्विटी मल्टीप्लायर रेशियो. नाउ दिस रेशियो इज सिमिलर टू योर टोटल डेट रेशियो, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करता है. यहाँ पर हमने क्या देखा कि आपकी एसेट है, उनके सामने आपकी कितनी डेट है, 1:1 या ज्यादा है या कम है. इक्विटी मल्टीप्लायर शो करता है कि अगर आपने $1 बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो आपने कितनी एसेट्स बनाई हुई है. नाउ दिस इज नॉट अ ग्रेट रेशियो टू एनालाइज डायरेक्टली, बिकॉज हो सकता है कि आपने $1 इक्विटी इन्वेस्ट किया है लेकिन $1 का डेट भी है और उसके बाद आपने $2 का एसेट बनाया है. सो दिस रेशियो मे नॉट बी अ ग्रेट इंडिकेटर दैट वेदर इक्विटी इज गेटिंग मल्टीप्लाइड और नॉट, बट स्टिल मैनी फाइनेंसेस यूजेस दिस. इसके अलग अलग पर्पस हो सकते हैं. फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वी विल अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, but from the logic point of view this formula doesn't make too much sense. For example, as I said, आप $1 million का लोन लेकर आए, $1 million आपने अपनी जेब से डाले. Now you have a total debt plus liabilities 2 million, आपकी एसेट से 2 million की. Is it actually the equity multiplier? Maybe, may not be, because आपके पास total assets है 2 million
The total equity is 1 million. You say you have a 2 times your assets than your equity. It's a great, but may not be great if you have a very high debt ratio. तो हमेशा debt ratio and equity multiplier hand in hand assess करने चाहिए, not individually. नहीं आएगा एग्जाम में इतना डीपली, बट फ्रॉम द फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू, द फॉर्मूला इज टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय योर टोटल इक्विटी. Okay. ठीक है, एक बार नंबर्स देखते रहना. हाँ, अदरवाइज वंस यू गो टू अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप स्टक हो जाओगे. So we want a higher equity multiplier. You cannot tell it whether you want a higher or a lower, because your total asset is not funded by the equity, only equity. अगर बिजनेस में डेट है ही नहीं, so you obviously want a higher, that you invested $1, you have an asset of $4, so you are doing a 400x business. But if you have a debt, then you really can't say whether higher is good or a lower is good. It really depends on case to case and the judgment of the balance sheet. Okay. चले नेक्स्ट रेशियो पे. जी. चलिए, नेक्स्ट रेशियो है आपका टाइम्स इंटरेस्ट अर्न. ये रेशियो आपका क्या बोलता है कि मान लो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है $100 का, आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस है $10 का. सो कंपनी के पास कितना पैसा है कि वो इंटरेस्ट कितनी बार पे कर सकता है. सो इन आवर एग्जांपल, कंपनी के पास लेट्स से ग्रॉस प्रॉफिट है $100, इंटरेस्ट है $10. सो वी Gross कैन, or operating? आई एम गिविंग यू एग्जांपल राइट नाउ, आई एम नॉट गोइंग टू द फॉर्मूला, आई एम बिल्डिंग द लॉजिक. सो फॉर्मूला क्या बोलता है कि आपका $10 का जो इंटरेस्ट है, अ कंपनी कैन पे इट फॉर 10 टाइम्स. इट इज कॉल्ड टाइम्स इंटरेस्ट अर्न. आपके पास जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आज की तारीख में है, आप उससे कितना गुना ज्यादा कमा रहे हो, दैट इज कॉल्ड टाइम्स इंटरेस्ट अर्न. नाउ you use operating profit as your formula, which is nothing but your EBIT, earnings before interest and taxes. Now, how EBIT is calculated? So you take gross profit minus operating expenses. तो ये फॉर्मूला में आप क्या चेक करते हो कि जो आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है, विच इज योर बिजनेस कोर बिजनेस इनकम, वहां पर कितनी इनकम है जिसके सामने आप इंटरेस्ट एक्सपेंस पे कर रहे हो. सो इफ योर EBIT is 100, your interest is 10, you can say you are earning 10 times your interest expense as a EBIT. It is called times interest earned. Official formula, EBIT divided by your interest expense. Again, higher is better. You want to earn as many time as possible. You don't want कि आपका operating profit 10 है और interest भी 10 है. It's a very high risk item कि आप सिर्फ 1x ज्यादा कमा रहे हो. So if tomorrow something goes wrong in your business, then you may not be able to pay your interest. Generally 2x, 3x, 4x, higher the higher is better. There is no benchmark. बट हायर इज बेटर कि आपका ऑपरेटिंग मार्जिन इतना अच्छा होना चाहिए कि एटलीस्ट आप 2 3 4 5 टाइम आपका इंटरेस्ट आप एटलीस्ट पे कर सको. सो यू आर कवर्ड फ्रॉम द बिजनेस फ्लक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू. अगेन एक चीज समझो, इंटरेस्ट इज जनरली अ फिक्स्ड कॉस्ट अगर आपने फिक्स रेट पे लोन लिया है. सो अगर आपका सिचुएशन ऐसा है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट और EBIT 20 है और इंटरेस्ट एक्सपेंस 10 है, सो करंटली योर टाइम इंटरेस्ट अर्न इज 2 टाइम्स. बट व्हाट इफ नेक्स्ट ईयर आपका रॉ मटेरियल बहुत कॉस्टली हो गया एंड नाउ यू आर एबल टू हैव अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ ओनली $9 एंड यू आर एट अ रिस्क कि आप इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाओगे. सो ऑब्वियसली द हायर इज बेटर फ्रॉम द टाइम्स इंटरेस्ट अर्न स्टैंड पॉइंट. एक बार चेक कर लीजिए बुक पे. इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो दोनों फॉर्मूला? कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट ऊपर उन्होंने इनकम वर्ड यूज किया है, नीचे उन्होंने अर्निंग्स वर्ड यूज किया है. बोथ आर द सेम. ओके.
चलिए, all four formulas comfortable. Solvency point of view से debt to equity, total debt, equity multiplier, and then times interest earned. एक और मैट्रिक्स है, फॉर्मूला शायद नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड जब आप फाइनेंशियल्स किसी कंपनी के यूज करते हो, so they used a lot of terminologies. They say gross margin, they say bottom line is your net profit, and they say EBITDA. EBITDA, we just saw earnings before interest and taxes, which is your operating margin. Another one they generally use is EBITDA. So when they say it's EBITDA, it's earning before interest and taxes only. But if they say EBITDA, then it's earnings before, I stands for interest, taxes, depreciation, and amortization. So this is again a parameter a lot of company uses from the performance perspective. Why company uses? Because depreciation, amortization, interest, and taxes, they are not in your control. You have to pay interest, no choice. You have to pay taxes, no choice. You have to bear depreciation, amortization, no choices. So what choice company has to improve their operating margin, your gross margin, and operating expenses? So sometimes the company use the EBIT as the parameter, sometimes the company use EBITDA as their parameter. अब EBITDA कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? आपके पास दो अप्रोचेस है. नाउ अगेन आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट ओपन योर इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट एंड जस्ट ट्राई टू बिल्ड योर ओन फॉर्मूला. सो आपका जनरल फॉर्मूला क्या है? इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स गिव्स यू ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिव्स यू operating profit. Operating profit minus interest expense gives you income before taxes. Minus taxes gives you income after taxes or net income. तो एक तो आप ऊपर से नीचे आ सकते हो. सो योर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिव्स यू ग्रॉस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विदाउट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन गिव्स यू इबिडा. तो ये एक ऑप्शन है कि आप ऊपर से नीचे आ जाओ, टॉप टू डाउन आप आ जाओ. एक ऑप्शन है कि आप बॉटम से अप जाओ. सो यू ऑल स्टार्ट विथ नेट इनकम. जो जो आइटम्स माइनस हो रही है आप उनको प्लस करो, प्लस हो रही है उनको माइनस करो, बिकॉज आप रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हो. So you start from the bottom, you start from the net income. What you don't want interest, taxes, depreciation, and amortization. So add back those items. So in net income, but you increase with income tax expense, increase with interest expense, and increase it with depreciation and amortization expense. दोनों सिचुएशन में आपको जो रिजल्ट है वो आपको रिजल्ट सेम ही मिलने वाला है. So a one performance matrix जो lot of companies use in the market is EBITDA. Calculations देख लो year 1, year 2 के with the example which they have given in the question. ओके, ये हो जाने के बाद 5.2 EPS earnings per share, ये भी हमने किया हुआ है. So please go through it. This should be easy one for you now.
Done. चलिए, EPS all clear? Yes. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. वन मोर रेशियो विच वी हैव इज पीई रेशियो. नाउ पीई रेशियो सिंपली वे में अगर मैं आपको बताऊं कि पीई रेशियो क्या होता है. सपोज you are a shareholder, and as a shareholder you are having an EPS of $2, which means you are earning $2 per share. लेकिन मार्केट में यही स्टॉक जो ट्रेड हो रहा है वो $12 में हो रहा है. It means you are earning 6 times more in market than your EPS under your book value method. So what is the multiplier effect? Investors are happy कि उनका EPS positive है, EPS अच्छा है. But as an investor, you are also more keen to know the capital gains and the appreciations in the market. So PE ratio represents कि आपका EPS और आपका मार्केट प्राइस उसमें कितना डिफरेंस है. So in our example, they have said that EPS is $2 per share, and let's say if the market price of the share is $12, so it is said that you are earning 6 times more as a capital appreciation. This is the long-term investor's wealth creation, which is a 6 times more than the book value. So book value से तो safe ही हो, you have a positive EPS, but market में भी you are earning 6 times. So higher the better. You want higher PE ratio as possible. Higher the PE ratio, you can maximize the wealth. एक बार देख लो PE फॉर्मूला. Done. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. डिविडेंड रेशियो. डिविडेंड रेशियो क्या बोलता है कि कंपनी ने कितना कमाया और वो कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है. वेरी सिंपल रेशियो. सपोज कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया 100K का एंड कंपनी इज पेइंग 30,000 एज अ डिविडेंड. सो 30% इज अ डिविडेंड पे आउट रेशियो. A simple formula, what is the dividend you are paying divided by your net income. एग्जाम्पल देख लो नंबर्स के साथ. आर यू एबल टू फॉलो दिस और नॉट? ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड्स पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर. सॉरी, कहाँ पर एक्स्ट्रा फॉर्मूला है? इन द एक्सप्लेनेशन. The ratio indicates the portion of current earnings being paid out as a dividend. Alternatively, calculate the dividend payout as a dividend per share divided by earnings per share. अच्छा, ये आपको तरीका अलग बोल रहा है. एक तरीका है कि आप पूरा डिविडेंड कैलकुलेट करो टोटल और पूरा नेट प्रॉफिट करो, या आप इसको ईपीएस से लिंक करो कि डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर क्या है. दोनों का मतलब सेम होता है. सपोज लेट्स गो टू द एक्सेल शीट एंड राइट इट डाउन. सपोज आपका जो नेट इनकम है, लेट्स से इट्स 100,000 और आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स है लेट्स से दे आर 10,000. सो आपका जो ईपीएस वो बनता है दैट इज लेट्स से $10 पर शेयर. Now let's say कंपनी अनाउंस की है जो 1 लाख का उन्होंने अर्न किया है उसमें से 20% दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट एज अ डिविडेंड. सो डिविडेंड कितना पे कर रहा है कंपनी? 20,000 दे आर पेइंग अमॉन्ग दी 10,000 शेयर होल्डर्स. तो डिविडेंड पर शेयर क्या बन रहा है आपका? दिस इज $2 पर शेयर. आप दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो के लिए. या तो आप नेट इनकम से चलो, टोटल डिविडेंड पेड डिवाइडेड बाय योर टोटल नेट इनकम. 0.2 और 20% इज अ डिविडेंड पे आउट रेशियो. या आप ईपीएस से चलो, पर शेयर आप 2 पे कर रहे हो अगेंस्ट पर शेयर यू आर अर्निंग 10 अगर इट्स 0.2. तरीका सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, जस्ट दिखाने का प्रेजेंटेशन अलग है. बट इट्स अ स्मॉल थिंग. यहाँ पर आप टोटल अमाउंट्स देखते हो फॉर ऑल द पीपल इन द कंपनी. यहाँ पर आप देखते हो पर इक्विटी शेयर क्या सिचुएशन बन रहा है अर्निंग्स में और डिविडेंड में. अगेन रिजल्ट इज द सेम. Okay. चलिए लास्ट वन, ओवर टू यू. एसेट टर्नओवर आपकी मेथड से कैलकुलेट करो. डोंट लुक एट द सॉल्यूशन, जस्ट गो एंड ट्राई टू सी वेदर यू आर एबल टू मैच द सॉल्यूशन और नॉट. अगेन टर्नओवर है मतलब आपका बॉटम में कोई चीज एवरेज चले जाएगी, क्या जाएगी? एवरेज एसेट्स. टर्नओवर मतलब सेल्स.
जनरली इन्वेंट्री और अकाउंट्स पेबल में कॉस्ट ऑफ सेल्स, बाकी सारे में सेल्स. The formula is sales divided by average assets. Is this different from the formula we did before? No, it's exactly the same. कैलकुलेट कर लो, आपका नंबर मैच होना चाहिए. Hmm. चलिए, all good. This actually ends your chapter. Before we go to a variance analysis as a costing topic, what I want you to practice right now, all the ratios which we have calculated today. So start looking at the solvency ratio. Let me give you the headers. If you don't remember the formula today, you can use the book reference, but try to build your own formula. So you have to calculate debt to equity ratio. So let me just put on the bottom of the side. So let's have debt to equity. Let's calculate total debt ratio. Let us have equity multiplier. What else we have covered? Total debt equity times interest on ratio. And do you have the information given about number of shares here? Par value $1. Let's assume par value is $1. So let's also calculate your EPS and then dividend. So let's calculate EPS and then let's calculate dividend payout ratio. Assume 15% is paid. ठीक है, so over to you. Wherever you stuck, let me know. I'm here only. इसके बाद एक break लेते हैं, then we'll come back. We'll start with the costing topic, which is a flexible budgets. Again, very simple one. We should be able to wrap it up today only. So over to you. जहां अटको आप मेरे को एक बार पूछ लेना.
My EPS is not making sense. Sorry, what is not making EPS? Yes. EPS का आपका क्या फॉर्मूला बनता है? नेट इनकम डिवाइडेड बाय योर नंबर ऑफ शेयर. आपने क्या लगाया? B51. लेट्स चेक व्हाट इज B51 फर्स्ट. B51 is your net income. ठीक है. What is used as the denominator? That is B33 plus B36. क्या है B33 और B36? ठीक है. नेट ये आपकी वैल्यूज है. सो व्हाट आर योर नंबर ऑफ शेयर्स? कि आपका $10,000 का टोटल वैल्यू है. सो $10,000 and 5,000 का ट्रेजरी आप पटाओगे, इट बिकम्स योर $5,000. सो योर अर्निंग्स पर शेयर विल बी 255 divided by 5,000 shares, which is 51. This is perfectly fine. Confidence क्यों नहीं है फिर? बराबर तो किया है आपने. कंपनी का 51 पर This is शेयर. mathematics. एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बोल देता कि दिस इज $0.1 पार वैल्यू, अगर इसको मैं कर देता 1 की जगह 0.1, आपका ईपीएस 5.1 आ जाता. मैथमेटिक्स है ना. दिस इज अ आर्टिफिशियल क्वेश्चन, नॉट द रियल लाइफ एग्जाम्पल. Okay. ठीक है. कॉन्सेप्चुअली यू आर परफेक्ट. सो यू हैव डन विद debt to equity. I'm not going because you are confident. Total debt, equity multiplier, EBIT, EPS, dividend payout ratio निकाल दो एक बार. The common stock value in the stockholders' equity always includes treasury stock, right? Even though we subtract treasury stock later on. No, it is presented separately. So first of all आपको ऊपर दिखेगा what is your total number of share minus treasury share outstanding gives you a total net equity. तो So, आपको जो ऊपर दिखेगा this is always your authorized and issued shares. ये जो है the 30, this is your authorized and issued shares only. However, EPS is calculated on the outstanding shares. Outstanding share क्या होता है? Your issued share minus your treasury stocks gives you the outstanding shares. okay, so for dividend, I will subtract the treasury stock from common stock value. Yes, absolutely. क्योंकि अगर स्टॉक आपने वापस ले लिया है तो उसमें तो आप डिविडेंड पे नहीं करोगे. Okay. For dividend payout, we would only consider cash dividends, and for instance, in another example, if there are any kind of other dividends, then we would not consider them. We will not consider. Yes, we are only focusing on cash dividend right now. So cash dividend ratio only covers the cash payments. Okay, I'm done.
हो गया आपका, एक बार बताना फिर। जी, हो गया। ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, मे बी हम लोग आते हैं, बट बिफोर दैट आई एम गिविंग यू समथिंग टू थिंक थ्रू इन दिस ब्रेक. What is the meaning of variable cost and fixed cost? What are the items can be in variable cost and fixed cost? What is the nature of it? And what happens when you start doing a production? Now, this is a costing topic. This is not exactly an accounting topic we are going to do right now. This is something covered in a costing subject, flexible budget. Lekin before we go into a flexible budget, we need to understand a little bit of costing principles. So just think through in this 10-15 minutes, what is the variable cost? What is the fixed cost? And what happens when you start doing the production? What happens with first 100 unit, next 100 unit? What will happen to this both type of the cost? This is the chapter we have to do. Only this much of the chapter we have to do for flexible budgeting. इसमें आपका सब कुछ cover हो जाएगा. Very easy to understand. मैं आपको break के बाद बता दूंगा. We should be able to wrap up along with the example today. So not a difficulty level at all. बट आप आपके कॉन्सेप्ट्स को रिमेम्बर करो. इफ नॉट आई विल कम बैक इन 10-15 मिनट्स. हम लोग यहाँ से आगे करते हैं ऑन द फ्लेक्सिबल बजट पार्ट.
चलिए शुरू करते हैं. If you are back. Yes. Okay, so over to you. What is the fixed cost and what are the variable cost concepts? Anything you have heard in the past, anything like that? Fixed cost is a one-time cost that does not change. Variable cost depends on the units and the number of units we produce. Not really fixed cost. So, for example, rent expense, is it a variable cost or a fixed cost? Fixed cost. So, is it a rent is a one-time cost or it will keep on recurring as well It will recur, but at the same amount. at the same amount? So, that is important. So, fixed cost is a cost which remains the same. So, amount remains the same over a period of time. So, हर month आप अगर जो rent pay कर रहे हो, you will continue to pay that rent only. What happens in case of variable cost? It varies and it depends on your units So let me ask you this way. Does per unit changes or only total changes? per unit. So for example, raw material of this pen, you are having a $5 of expense. So if you manufacture one pen, it's a $5. If you manufacture second pen, it's again a $5. Total is $10, 5 plus 5, but per unit is $5 only. So variable cost does per unit changes or total amount only changes? By per unit, I meant the amount of units you're producing, but the total amount is. The total amount changes, but your per unit cost remains the same. So variable costs are those costs where per unit cost is same. As the volume goes up, so impact on production, as the volume goes up, your per unit remains same, but your total cost increases. For fixed cost, if volume goes up or goes down, doesn't matter, it remains the same irrespective of volume. So if you produce a 1 unit or a 1 lakh unit, rent is going to be the same. So what are the items, possible items which can be a part of your variable cost and fixed cost? So variable costs are those costs which are directly associated with the manufacturing or production of your goods. So it could be your raw material. It could be your raw material. It could be your direct labor. It could be your variable overheads. All these are variable costs. What are the fixed costs? These are like depreciation, or let's say a rent expense, or let's say a marketing salary. All these are your fixed cost. ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है. जस्ट टू बिल्ड व्हाट इज फिक्स कॉस्ट एंड व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट. Yes. ठीक है, अब फ्लेक्सिबल बजट का कॉन्सेप्ट आया क्यों? सो इन द ओल्डर डेज कंपनी यूज्ड टू हैड अ स्टैटिक बजट्स ओनली. Static budget is used only for a one level of production. So what was happening in the earlier times? Let's say a company planned that in the year one, they are going to have 1,000 units produced and sold. So they prepare their static budget. They say what will be the units to be sold. So they say 1,000. They say what will be the selling price per unit. Let's say they say 2 per unit. So what is going to be the total sales? They say total sales will be $2. Now they say what is your variable cost per unit? They say it could be $1. So what will be your total variable cost? It will be 1,000 into 1, $1,000. What is going to be your total units? It's 1,000. So what is the contribution per unit? The contribution is nothing but your sales minus your variable cost. So sales plus variable cost, sales minus variable cost gives you the contribution. So it's $1. So what is total contribution? You are planning to sell 1,000. So 1,000 into 1 will be your total contribution. Less what is your fixed cost you predict? Let's say you predict $600 of fixed cost. And at the end, you predict a net income for the company will be $400.
Now, this was a budget which was prepared at the beginning of the year. Now, let's say company actually end up using 975 units only. So this is your budget, and now your actuals were 975. Now, older days, you had no concept of very flexible budgeting. So what used to happen that you used to prepare the budget again. What you say, let's copy the all the formula. This is only formula, it's very easy. But budgeting is a very deep, detailed process. So every year you have to first estimate number of units to be sold, what raw material is required, order the raw material, then what raw material will go to a production, then decide the production, then production will go to your warehouse, decide what warehouse storage capacity is required, what is the insurance required, then warehouse, then it goes to a sales, then it comes to a collection. All those things are a very detailed process. So company used to do an entire activity again. Why? Because they wanted to compare the performance of the company, because it was a static budget. Now you cannot compare a budget of 1000 unit with a budget of 975 units. So they used to prepare another static budget at 975 units to make sure they can compare actual of 975. So what they used to do, they used to prepare the entire budget again. Let's say this is your static budget. You say your number of units will be sold will be now 975. Selling price was 2, total sales, variable cost. Your total variable cost used to be $1 per unit, so it gives you a total contribution. Contribution per unit remains the same, less fixed cost. Let's say your budgeted was $600. Now you want to compare the static budget of 975 units with actual performance of 975 unit. Let's say in reality company sold 975 units, but company sold it for $1.9 only, not $2. And variable cost of the company was $1.2, not $1. Sorry, what is static then if actual is different? So static means your budget, actual is the actual delivery. This you do at the beginning of the year. That in But this year you are planning to do so and so sales, so and so purchase, so and so will be your net profit. This but is your wasn't actual figures. but wasn't budget for 1,000? Exactly. The initial budget was for the 1000 unit, but when you had actuals of 975, earlier days, you had no concept of flexible budgeting. So company has to again re-prepare their budget for 975 unit to make sure they can do apple to apple comparison. यहाँ पर क्या हो रहा था? Your sales people will come and say that okay, we did a sales of 975, but your budget was 1000. You cannot compare us. Production people will come and say that you decided to have a production of 1000 units, but we only did 975. It's a blame on sales people. They did not bring the sales. We should not be penalized. Contribution will go down, and contribution will go down against 1000 units. You plan $1, actual is 0.7. So apple to apple comparison was not possible. So what management or the company in the older days used to do, that they will re-prepare the master budget for actual units sold, and they try to bring actual versus budget on apple to apple comparison. Now they will call sales people and say, look, you sold 975. At the same 975 units budget, you should have done a sales of $1950, but you only did $1852, so you have not done a great job. Then they will call a production people. They will say for 1975 units, you should have incurred only a cost of $975. You have actually incurred $1170. You also have not done a good job. And they will call the management of the company and they say at 975 units, you should have on 975 of your total contribution. Let's see what is the total contribution company is earning. So 0.75 into 975, only 682. So again, they will call and say, management, you have not done a good job. Fixed cost, let's say actual fixed cost turned out to be a $650 instead of $600. So now they will call the rent people, the marketing people, and say you have incurred a more spend than what we budgeted. And ultimately, they will say to board of directors that we should have a profit of $375 at 975 level of activity, but we only have a profit of 32.5. This was a story older days. मेरा कहने का पर्पस ये है
कि every time your actual was not equal to budget, company had to re-prepare the budget here and there every time, which was a time consuming activity. In order to overcome this issue कि आपको बार बार बजट बनाना पड़ रहा था, to avoid this activity, a flexible budget came into a picture. तो फ्लेक्सिबल बजट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपका जो पर यूनिट कॉस्ट है वो चेंज हो रहा है फॉर वेरिएबल कॉस्ट, वेयर एज द फिक्स कॉस्ट इज द सेम. सो व्हाई डोंट वी बिल्ड अ मॉडल, लेट्स से अ मॉडल y is equal to a plus bx, Before where we y, go there, what was your formula for contribution? contribution is sales minus variable cost. So sales of 1852 minus variable cost of 1170 gives you contribution of 682. Okay. It's exactly the operating profit. जो आप फार या accounting in terms में बोलते हो, this is your operating profit. Your sales minus your operating expenses. No, but operating expenses also have fixed costs. I'm giving you logical understanding. आप apple to apple चीजें compare मत करो exactly. I'm giving you a logical understanding कि अगर आपको इसको फार से compare करना है, आप ऐसे कर सकते हो. If you are talking about that sense, तो फिर आपको net income देखनी पड़ेगी जिसमें आपकी दोनों cost आ रही है. Then you will get more confused. Here what we are trying to say कि आपका जो operations है वो कितना earn कर रहा है. This right now we are in costing. Costing में operating profit होता है only after variable cost. Why? Your decision making is changed. Hypothetically, ये आपका एक business है जहां पर आपका fixed cost है 800 का and you have a loss. My question to you, whether you will close the business or you will continue the business? Close. Exactly the wrong answer. Why? क्योंकि आपका contribution या operating profit is in plus. What does it mean? कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, you have to work only on your fixed cost. आपका अगर प्रोडक्शन मान लो 975 की जगह let's say 2000 यूनिट्स हो गया, your operating income will increase, your net profit will increase. या let's say at 975 आपने आपकी selling price पे काम किया and now you can sell at $2.5, contribution increase, net profit increase. और let's say आपने आपकी cost पे काम किया 1.2 से ये कम होके हो गई 0.7, again profit increases. So without touching the fixed cost, your profit is getting changed. So now you are in the world of the costing. So costing में जब हम operating profit की बात करते हैं, it's a decision making profit. I'm giving you a comparison ताकि आपको समझ आए कि हमने जो accounts में किया है, it's exactly similar, but the decision making concepts are different. आप accounts का formula costing में use करोगे तो आप फंसोगे, because you said कि यहाँ पर loss है, yes यहाँ पर loss है, but is it a relevant loss for a decision making point of view? No. क्योंकि कल को आपने मान लो प्रोडक्शन जीरो कर दिया, यू हैव अ जीरो कंट्रीब्यूशन, लेकिन आपको फिक्स कॉस्ट तो स्टिल पे करनी है ना, बिकॉज यू हैव अ 1 year agreement. So is it a wise decision to close the business? No. Why? You still have a fixed cost to incur. So what is the better thing? To work either on number of units to be sold, or selling price to increase, or variable cost to decrease. ये तीनों पैरामीटर में से अगर आपने किसी एक पैरामीटर पे भी काम किया तो आपका अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा. Okay. ठीक है. नाउ इसके बेस पे हम लोग एक मॉडल बिल्ड करते हैं कि कंपनी को बार बार स्टैटिक मॉडल ना बनाना पड़े. व्हाई? व्हाट दे कैन डू? So they can use a formula y is equal to a plus bx, where y represents your total cost. The total cost is your variable cost plus your fixed cost. So y is equal to your total cost, where a is equal to fixed cost in total. तो यहाँ पर भी अगर हम हमारे मॉडल में देखेंगे, the fixed cost, this is always a total amount. It doesn't matter कि आप 1 यूनिट बेचो या 1 लाख यूनिट बेचो. Your budgeted fixed cost, and let's ignore actuals for a time being क्योंकि हम लोग अभी बजट बनाने की बात कर रहे हैं. So your fixed cost remains the same whether you have a static budget at 1000 unit of activity or a static budget at a 975 level of activity. So we call fixed cost as A. This is your total fixed cost. Again word पे focus करना, we are talking about total fixed cost amount. Plus BX. B का मतलब हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट.
So what we are saying that let's build a second model जहां पर हम बोलेंगे what is our variable cost per unit, this is B, and X represents your total number of units to be sold. So यहाँ पर हमारी टोटल कॉस्टिंग क्या निकल कर आ रही है, लेट्स से y का अगर यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाए y is equal to a plus bx, what is our total fixed cost, let's say it's 600, plus what is our variable cost, b represents variable cost per unit into number of units to be sold. So it's 1600. Tally करें कैसे 1600, 1000 is a variable cost, 600 is a fixed cost, total आ गया मेरा $1600. Let's see at 975 activity हमारी क्या बनती है, what is my total fixed cost 600, same, what is my variable cost per unit 1 into units 975. Now what is my total cost 1575, let's tally 1575. Now it's working, so हमारा मॉडल काम कर रहा है. So what we are saying कि company instead of re-preparing the budgets every year for a different level of output, what company can do, company can just identify 3 parameters. So parameter number 1, they have to identify variable cost per unit. Parameter number 2, they have to identify desired outputs. And this can be changeable outputs. So once you change the output, you have a budget readily by a one Excel click. And number 3, what is your fixed cost in total? So if you can have this 3 information available with you, you can prepare a budget for the n number of activity. Suppose यहाँ पर management को देखना है कि what will be our budgeted profit if company do a business of 900 units, 950 units, 975, 1000, 1025, 1050 and 1100 units. तो पहले क्या होता था, आपको 8 अलग अलग बजट वापस बनाने पड़ते थे कि just let's do rework. But because your flexible budget came into a picture, आपका fixed cost तो हर एक लेवल पे सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका सेम रहेगा, जस्ट आपका जो नंबर ऑफ यूनिट्स है which is your x, this will only get changed and you will automatically will keep on getting the results. Clear है ये फॉर्मूला? Yes. आई एम जस्ट बिल्डिंग अ कॉन्सेप्चुअली, आपकी बुक में सीधा का सीधा फॉर्मूला दिया है, नथिंग एल्स इज गिवन. मैथमेटिकली बहुत सिंपल चीजें हैं, बट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना जरूरी है दैट व्हाई वी आर डूइंग अ फ्लेक्सिबल बजट्स. ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. जब भी आपको फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन आएगा, पुट द इंफॉर्मेशन इन दिस फॉर्मेट and your answers will be out. So this represents your level of activities. So let's say company can have a budget for, in our example, let's say 950 units, 1000 units, let's put 975 units, 1000 units, 1025 units, 1050 units and 1100 units. These are the various level of activity. This is a detailed format. आप budget बना सकते हो as per the historical days. अगर आपको आज के दिन में बनाना है, you have a fixed cost in total, this is going to be same. आपका variable cost per unit will be the same. You have also a number of output. This is only a variable factor or a changing factor which is the x in your formula. अगर आप ये formula use करोगे, you will get answers in a seconds rather than preparing this entire particular format. चले बुक पे कोई क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली यहाँ तक? चले जी. Okay, let's read through क्या बोलता है. Variance analysis. The purpose of the flexible budget is to help management what is your actual performance versus your budget performance. So variance analysis is a tool for comparing the measure of the company's performance to a plan, budget or a standards. Variance is used for the planning and control purpose and can be used to evaluate the revenues and the cost. Comparison of the actual results to the annual business plan is first and basic model. So हमेशा पहले आप क्या करोगे, बेसिक मॉडल बनाओगे, उसको आप एक्चुअल के साथ आप कंपेयर करोगे. Now your cost can be classified either as a variable cost or a fixed cost. Variable cost in total, again important word, in total, changes as the production level changes, while fixed cost in total they remain same regardless of the production or the sales level. तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है लेकिन टोटल चेंज होता है. फिक्स कॉस्ट का टोटल चेंज होता है
पर यूनिट वो वेरी करती है। आई एम टेलिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, और ये एमसीक्यू में आपको ट्विक कर सकते हैं। लेट्स सी इन अवर एग्जांपल, आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो 1 ही था, लेकिन आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गया। इफ यू सी -1000 -975, सो वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट सेम रहेगी, बट टोटल आपका चेंज होगा। जबकि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमेशा चेंज रहेगी, बट टोटल सेम रहेगा। सो इफ यू सी द फिक्स कॉस्ट इज 600 टोटल सेम है, लेकिन अगर आपको पर यूनिट अगर निकालना है, so 600 डिवाइडेड बाय 1000 एंड 600 डिवाइडेड बाय 975। तो ये एमसीक्यूज में आपको ट्विक कर सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस, टोटल सेम। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम, टोटल चेंजेस। तो आपको ये कॉन्सेप्ट, ये अगेन ये फॉर्मेट से आपको हेल्प होगा ऐसे एमसीक्यूज को आंसर करने के लिए भी। ना हमने जो फॉर्मूला बताया, इन्होंने भी सेम फॉर्मूला रखा है। बजट्स आर सेल्स प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेस फिक्स कॉस्ट इन टोटल। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब आपका एग्जांपल देखते हैं कि जो बुक में दिया गया है। एग्जांपल नंबर 1, Neostar Corporation has prepared its annual business plan for year 1. The organization has anticipated that it would sell 10,000 units of the product at 15 apiece. So can I say your budgeted production was 10,000? Sorry, budgeted sales was 10,000. Your selling price was 15. So your budgeted sales would have been $150,000. Yes. तो यहाँ पर देखते हैं बजट सेल्स $150,000. That would contribute a contribution margin of 20%. Now, can I say sales minus variable cost is the contribution? So if contribution is 20%, can I say variable cost is 80%? Yes. Pakka. Sales minus variable cost is the contribution. Contribution is 20%. So can I say your variable cost component is 80%? Yes. तो आपका सेलिंग प्राइस है 15 का 80% कम्स टू $12 एज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट into number of units $10,000. So your variable cost was $120,000. यहाँ तक क्लियर है? Yes. So your contribution comes to $30,000, sales minus variable cost. Now the fixed cost आपने जो बजट की है वो है $25,000. So budgeted fixed cost in total $25,000 gives you a net operating profit of $5,000. तो आपने बजट क्या किया? यू बजटेड 150 आपका सेल्स होगा, 120 आपका वेरिएबल एक्सपेंस होगा, आपका कंट्रीब्यूशन होगा 30,000, उसमें से आप फिक्स कॉस्ट उठाओगे एंड यू आर गोइंग टू अर्न अ $5,000 आउट ऑफ दिस। एक्चुअल्स में क्या हुआ? एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स आपने जो सेल की है दे वर ओनली 8,000 यूनिट्स। सो यहाँ पर कंपनी को हिस्टोरिकल डेज में क्या होता था? अगेन रीप्रिपेयर द स्टैंडर्ड बजट फॉर 8,000 यूनिट्स टू मेजर द परफॉर्मेंस। Now 8,000 units have generated $112,000 of revenue. So your actual sales now is 112,000. Variable cost is 1,800. So 1,00800 is your variable cost, gives you a contribution of 11,200. आपका फिक्स कॉस्ट है 24,000. एक्चुअल आपने बजट किया था 25, लेकिन एक्चुअल में इनकर्ड हुआ 24 एंड योर ऑपरेटिंग इनकम इज -12K. Budget minus actual gives you a variance, but this variance is not decision making variance. You can't call sales people and say कि किसकी गलती है, क्या प्रोडक्शन वालों की गलती है, they did a lower production, or is it a mistake of a sales marketing people कि उन्होंने कम में गुड्स सेल किए. You can't call production people and say कि आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा इनकर की या आपने प्रोडक्शन कम किया. You can't call and say fixed cost. You can call and ask the fixed cost people that you have done a good job. कि हमने खर्चा estimate किया था $25,000, आपने actual में खर्चा किया $24,000. So this is still a reliable factor. So in order to evaluate the results, it is important कि हमारे पास actuals जो है
उनका भी हमें पहले फ्लेक्सिबल बजट मिल जाए, देन वी कैन डू अ एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन. So let's go through and read. To enable the better analysis of the performance, management has to prepare a flexible budget. So हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल रिजल्ट्स जो आया है वो लेवल पे हम लोग एक बार फ्लेक्सिबल बजट को प्रिपेयर करेंगे. आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो, दैट्स अ सिंपलर वे. y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, where represents your total budgeted fixed cost. Let's say your budgeted fixed cost was $25,000. B represents the number of units company has sold, that is $8,000, और आपका costing था per unit 12. So let's put this formula. Y is equal to a plus bx. So y, अब अपने को y find करना है, which is our total cost. Your a is the fixed cost, which is the budgeted fixed cost $25,000, plus b into x, where b is the variable cost per unit. Variable cost per unit आपने कितनी budget की थी, $12 per unit. आपने एक्चुअल में कितने यूनिट सेल आउट किए, $8,000. So now your budgeted cost becomes $121,000. Let's tally. $96,000 वेरिएबल कॉस्ट बजट हुई है, 25,000 फिक्स कॉस्ट बजट हुई है. इफ यू टोटल बोथ ऑफ दिस, यस, your flexible budget at the activity level of 8,000 unit, it's 1,21,000 from the costing point of view. इन्होंने डिटेल टेबल बनाया है. लेट्स प्रिपेयर अ डिटेल टेबल. एक्चुअल्स एंड बजट पे फोकस करते हैं. एक्चुअल यूनिट सोल्ड 8,000, बजटेड यूनिट सोल्ड 8,000. एक्चुअल सेल्स हुआ 1,12,000, लेकिन आपने बजट क्या किया था, $15 पर यूनिट, तो आपका सेल्स होना चाहिए था 1,20,000. वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअल कितनी हुई, 1,00800. आपने फोरकास्ट कितनी की थी, $96,000. तो आपको कंट्रीब्यूशन एक्चुअल में कितना मिला, 11,200. आपने फोरकास्ट कितना किया था, $24,000. आपकी फिक्स कॉस्ट एक्चुअल में कितनी हुई, $24,000. आपने बजट कितनी की थी, $25,000. आपका एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, लॉस ऑफ $12,800. आपने एस्टिमेट कितना किया था, अ लॉस ऑफ $1,000. नाउ आपके पास एक्चुअल रिजल्ट्स है और एक्चुअल रिजल्ट की एक्टिविटी के लेवल पे बजट भी है. नाउ यू कैन कॉल सेल्स पीपल एंड एवरीबॉडी एंड आस्क द रिलेवेंट क्वेश्चंस टू देम. पहला आपका क्वेश्चन क्या होगा कि आपको सेल्स करना था $15 पर यूनिट पे, विच इज 1,20,000. आपने एक 12 ही क्यों किया है. कॉल मार्केटिंग पीपल एंड आस्क देम व्हाई यू हैव डन अ बैड सेल्स बाय $8,000. सेकंड, कॉल अप द प्रोडक्शन पीपल. आपको इनकर्ड करना था कॉस्ट ऑफ $96,000 ओनली फॉर 8,000 यूनिट्स. आपने इनकर्ड किया 1,08,000. So why you have spent $4,800 more? Call them and call management. You should have earned a $24,000 of gross contribution. आपको एक्चुअल में मिला only 11,200. So overall, a review system of management was not good. It was inefficient. So you under recovered your contribution by $12,800. But you reward your fixed cost people. आपको खर्चा करना था 25,000 का, आपने किया सिर्फ 24,000 का. So you save the company's money by $1,000. Ultimately, you report to your board of directors कि हमारा estimated loss था $1,000 का, but eventually we did loss of $12,800. This is called a flexible budget analysis. लेकिन होल्ड ऑन, सेल्स पीपल वापस आए. सेल्स पीपल से इसकी बॉस अग्रीड कि हमने कम में बेचा है, हमको बेचना था एक पीस में, हमने बेचा 1/12 पे. बट व्हाट अबाउट द प्रोडक्शन पीपल और द मार्केटिंग पीपल, वो ऑर्डर्स ही लेकर नहीं आए. व्हाई थे ऑर्डर्स लेकर नहीं आए, क्योंकि जब आपने मास्टर प्लान सोचा था कि कंपनी को कितना करना चाहिए, दिस इज अ फ्लेक्सिबल बजट. फ्लेक्सिबल बजट का मतलब क्या है कि आपने बजट को एक्चुअल्स में कन्वर्ट कर दिया. सो यू हैव री-प्रिपेयर्ड योर बजट एज पर द एक्चुअल यूनिट सोल्ड. लेकिन जब साल की शुरुआत हुई थी तो वी डिसाइडेड कि हम 10,000 यूनिट्स को सेल करेंगे, बट हमारे जो मार्केटिंग वाले लोग हैं वो सिर्फ 8,000 का ऑर्डर लेकर आए. सो पीनलाइज देम एज वेल. So it is called a activity variance or a volume variance. It means your number of units were at a question. Flexible budget variance, your pricing decisions were at a question. तो एक बार देखते हैं वॉल्यूम वेरिएंस कैसे हम असेस कर सकते हैं.
हमें बेचना था 10,000, हम बेच के आए सिर्फ 8,000. सो वी हैड अ शॉर्टफॉल ऑफ 2,000 यूनिट्स. हमारा स्टैंडर्ड प्राइस क्या था? $15 पर यूनिट. तो हमारे मास्टर से हमने 30,000 का कम सेल्स किया है. दूसरे तरीके से अगर इसको देखना हो तो एज पर अवर मास्टर हमें 10,000 यूनिट्स बेचने थे एट 15 पर यूनिट, विच कम्स टू $1,50,000. बजट के लेवल पे ही अगर हम सोचे, वी आर नॉट इवन लुकिंग एट द एक्चुअल परफॉर्मेंस, वी आर जस्ट लुकिंग एट अ फ्लेक्सिबल बजट लेवल पे भी हमने सेल्स किया $1,20,000 का ओनली. सो $30,000 इज योर एक्चुअल शॉर्टफॉल. आप पीनलाइज किसको करोगे? 30,000 आप पीनलाइज करोगे मार्केटिंग पीपल को कि आपने ऑर्डर कम लाया. वेरेस $8,000 ऑफ पेनलाइज किसको करोगे? प्राइसिंग टीम को कि आपने कम में बेचा. ओवरऑल कंपनी को कितना हिट मिला? 150 का बजट वर्सेस 1,12,000 का एक्चुअल. द एक्चुअल लॉस इज $38,000, जिसके दो पार्ट है. 8,000 you are now penalizing to a pricing team and 30,000 now you are penalizing to your marketing team. क्लियर है यहाँ तक? Yes. चलिए वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं. इनिशियली हमने सोचा था कि अगर हम 10,000 यूनिट्स बनाते हैं तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी $1,20,000. फ्लेक्सिबल बजट एक्चुअल लेवल पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट बनती है $96,000. तो हमारा खर्चा बच गया. वाई? बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तभी इंक्रीज होता है जब आपका प्रोडक्शन रहता है. सो यू प्रोड्यूस लेस, सो यू सेव द एक्चुअल 24,000 का कॉस्ट फॉर द कंपनी. बट अगर हम एक्चुअल इम्पैक्ट देखें तो एक्चुअल में हमारा कॉस्ट है ओनली 1,008,000. सो नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि प्रोडक्शन कम हुआ, इससे तो हमारा फायदा हुआ $24,000 का. लेकिन जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसमें हमने 4,800 का ज्यादा खर्चा भी किया है. कैसे ज्यादा खर्चा किया है? फॉर 8,000 यूनिट्स हमें इनकर्ड करनी थी कॉस्ट ऑफ $96,000 ओनली, बट हमने इनकर्ड की 1,08,000. सो आपको 24,000 आपका सेविंग्स हुआ बिकॉज यू प्रोड्यूस लेस. लेकिन आपने 4,800 ज्यादा पे किया बिकॉज ऑफ योर प्राइसिंग इश्यू. नेक टू नेक आपने $20,000 यहाँ पर सेव किए बिकॉज यू प्रोड्यूस लेसर नंबर ऑफ यूनिट्स. Fixed cost has no impact. So overall, what we are saying from the company's point of view, कि at $10,000 of production हमें earn करना चाहिए था $5,000 का profit. ठीक है, कंपनी ने सिर्फ 8,000 यूनिट्स बनाए तो आपका लॉस होना चाहिए था $1,000 एज पर द बजटेड परफॉर्मेंस. लेकिन आपका एक्चुअल लॉस हुआ $12,800. सो एक्चुअल वर्सेस फ्लेक्सिबल बजट गिव्स यू एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कि आप जितना बेच के आए हो उतना ही कंपेयर करते हैं. एंड देन फ्लेक्सिबल वर्सेस मास्टर बजट गिव्स यू अ पिक्चर कि आपका प्रोडक्शन या आपका सेल्स कितना अच्छा या कितना बुरा हुआ. एट हायर लेवल आपने जो बजट किया था वो आप फुलफिल कर पाए कि नहीं कर पाए. So this is all about flexible budget and the master budget. These reports are used to do a variance analysis and penalize the people who have done a bad job. क्लियर है? एक बार दोनों एग्जाम्पल वापस गो थ्रू कर लो बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बिकॉज इट्स मोरली कवर्ड इन द बार सेक्शन. आपका एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा चैप्टर है. स्मॉल टॉपिक था सो वी हैव कवर्ड इट. आ गया तो वी डोंट नो. सो जस्ट गो थ्रू एग्जांपल 1, उसके साथ ही कनेक्टेड है एग्जांपल नंबर 2. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, इफ नॉट देन वी विल रैप इट अप द डे एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद आइदर रेवरेक या हम लोग फार 3 से भी शुरू कर सकते हैं बिकॉज रेवरेक इज अ कॉम्प्लिकेटेड वन and we may need a continuous 5 days of time, so maybe we can do Monday to Friday next week. और लेट्स सी, I'll figure it out कि कल अगर हमें स्मॉल टॉपिक करना है फार 3 में which is cash and AR, we can cover it up by Wednesday to Friday, so we'll do that. And Monday onwards we'll do a revrec or maybe we'll start revrec tomorrow. But एक बार ये 7.1 7.2 देख लो. If all done, we'll wrap up the session and we'll come back tomorrow for the new topics.
In the two different examples, uh, Mhm. we start with revenue, and then the other place we start with sales, and all the next items are the same. Yes, this is standard format. Entire costing when we will learn it's the standard format. Sales minus variable cost gives you the contribution minus fixed cost gives you the net profit. It's the same format across all the costing. Okay, but in flexible budget, then how are we saying that we're getting more data? No data means. As in, we are like pointing out for management decisions uh, that where the problem is. So that is the analysis I have told to you that management has to assess. You have this data in your book, they have not given to you that what is the analysis. This is I have given to you that how this data is used. Because अगर आप कोई चीज analyze करते हो तो कोई reason है, right, why you are assessing it. So this is the because I know this day in day out, I know that where all these things are getting used. So I have given you add-on information, not given in your backer material. Okay. Right. All clear with the flexible budgets and ratio analysis. थोड़ा सा बड़ा chapter था, it took 2 days, but pretty easy mathematical chapter. Yes. ठीक है, now as I said, either हम लोग जा सकते हैं रेव रैक पे और हम लोग जा सकते हैं कैश एंड एआर पे. सो आई लेट यू नो कि हम लोग क्या शुरू करते हैं बिकॉज रेव रैक इज एक्चुअली प्रीटी डीप टॉपिक. कॉम्प्लिकेशंस भी है, थियोरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है, काफी टर्मिनोलॉजीज बड़ी बड़ी भी है. रफली 15 स्लाइड्स बट ट्रेनिंग स्लाइड्स है, लाइक इट्स नॉट इजी. आप जो रियल लाइफ में सब कुछ देखते हो एवरीथिंग विल बी देयर कवर्ड इन दिस रेवरेक टॉपिक. सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग फॉर द शॉपिंग, let's say you go to a New Balance store and you purchase the shoes, and let's say you get a reward points, how reward points are accounted for. Next time आप again वापस जाते हो New Balance में, you consume the reward points, how accounting happens for that. I think demo session may I give you one example of Make My Trip, how a three-party transactions take place. कि आप let's say आपने Etihad Airlines book की from Make My Trip. So what is the accounting by Etihad? What is the accounting by Make My Trip? Or let's say nowadays there is a fashion of cashbacks. So suppose let's say you have made a one bank payment and bank has given you a 20% cashback. So how those cashbacks are accounted for. So lot of real life practical concepts plus new terminologies are there in the revenue accounting section. So I'll try to make sure we get a continuity so we doesn't get a break in between. At least 3 to 4 sessions minimum जाएंगे वो accounting standard में. And I think by end of the session you will be reasonably confident. But उसके MCQ और simulation साथ के साथ solve करते रहना because revenue completely changed accounting standard है. अगर आपने miss कर दिया तो आपको catch करना बहुत difficult होगा उसमें. Okay. All right, so I'll see you tomorrow with the new topic, either RevRec, yeah, we'll start with the FAR 3. Okay. Okay, thank you. Bye.